Everybody, this is Vipul Purohit and I welcome you all to my YouTube channel. This video, we are going to discuss about a topic of chemical bonding. My dear friends, when you talk about chemical bonding, I would say that this is the most fundamental topic as far as chemistry is concerned. I cannot think about chemistry without chemical bonds. No ways, it's not possible. So, let us discuss the most fundamental concept of chemistry. And in that also, let us discuss the basic concepts of chemical bonding. Alright? Everybody ready? Oh yes. So we begin with, what is chemical bonding? That's the first question which comes into our mind. And the answer to that is, in simple words, it's called as electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो कम से कम दो स्पीशीज होना जरूरी है. ओके, एक ही स्पीशीज से यार हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई लव माई सेल्फ, अच्छा नहीं लगता ना. अब बोलेंगे सेल्फिश है बहुत. ओके, सो नॉर्मली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अट्रैक्शन, जब हम प्यार करते हैं तो किसी दूसरे से प्यार करते हैं. ओके, वी से आई लव यू. ओके, इट्स लाइक दैट. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लाइफ. आई बीन टेलिंग यू दिस इन ऑल माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो. सो यहाँ पर हम सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, दैट इज गोइंग टू होल्ड द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल? इज combination of atoms results in a molecule. Alright, so if I break the molecule, I get atoms. It's as simple as that. So it's a force of attraction. Breaking की बात नहीं करनी है दोस्तों, दिल जोड़ने की बात करनी है. दिल तोड़ना नहीं है दोस्तों. ओके, वो टूटता है, केमिस्ट्री में वो सब चीजें होती रहती है, दिल तोड़ना, दिल जोड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब हम केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं. ओके, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लियाई टुगेदर, ओके, ऑफ द एटम्स ऑफ आइदर सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, सो ये हो गया बेसिक्स दोस्तों. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms in a molecule. It's called as what? Chemical bond. Okay? Now, when you talk about the chemical bond, question ये आता है कि क्यों, why there is a requirement of a chemical bond. Purpose क्या है उसका? Yes. Purpose, my dear friends, if I ask a question to myself, what is the purpose of chemical bond? तो ये देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, this one, the force of attraction which is going to be there, okay, in this, दिख रहा है? बहुत एकदम गुड के कर रहा हूँ ये आप लोगों को, बहुत जरूरी है ये force of attraction. And that force of attraction, my dear friends, is related to what? Stability. So the answer to this purpose is what? To achieve stability. Okay, ये priority है दोस्तों केमिस्ट्री का. That everybody wants to remain, every species wants to remain in a stable state. Now the next question is, okay, ठीक है, the purpose of chemical bonding is all about stability. So what is the parameter of stability? परिभाषा क्या है stability की? Definition क्या है? How do I say that yes, the particular species is stable? There are various methods, my dear friends, by means of which we can say the stability or comment about the stability of the particular species. And one of the most primitive one of the most common one, when you talk about stability, is which comes into our mind, क्या है वो? Yes, inert gas configuration. Okay? तो जब भी मुझे stability की बात करनी है तो मैं आपको inert gas configuration के बारे में बात करूंगा. So IGC short form यूज करेंगे दोस्तों. Okay, inert gas configuration means NH2 and NP6. This is related to stability. So try to understand now what is the purpose is. The purpose is related to stability, and the stability is related to what? Inert gas configuration. So that means the species will try to form a bond to achieve this inert gas configuration, and therefore it will achieve stability. यानी who is going to now form a bond? ये तो हो गया, ये सवाल तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इसका पर्पस क्या है? स्टेबिलिटी हासिल करना. और स्टेबिलिटी कैसे हासिल करेंगे? बाय इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who is going to form a chemical bond? अब स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है जनरली एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं केमिस्ट्री में, मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ। तो जनरली दोस्तों कौन बनाएगा ये बॉन्ड और वो
आंसर आएगा क्या, जो अनस्टेबल है। ओके अभी अनस्टेबिलिटी की परिभाषा कैसे हम लोग पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की परिभाषा कैसे की थी हम लोगों ने कि जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। यानी इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, एवरी स्टेटमेंट हैज गॉट टू मीनिंग, वन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग एंड द अदर इज अ इनडायरेक्ट मीनिंग। व्हाट इज अ इनडायरेक्ट मीनिंग इज कि द स्पीशीज व्हिच डू नॉट हैव अ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आर कंसीडर्ड टू बी व्हाट, अनस्टेबल. This is according to the simple theory. Please, there are various improvements which are being done. Okay, so where we have seen that the inert gas configuration is not there, but then still it is going to be what, stable. We are not going to discuss all those things over here because this is the basics. Okay, I started my video with this particular word that this is basics. So we are going to only consider with respect to inert gas configuration. दोस्तों केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसके हिसाब से हम उस कंसेप्ट को इलैबोरेट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट रूल के बारे में बात कर रहे हैं। और उस ऑक्टेट रूल के आधार पर मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग को कि अनस्टेबल वो होता है जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ओके द वन व्हिच डजंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेयर, सो दोस आर गोइंग टू बी अनस्टेबल। ओके तो वो हासिल करने के लिए वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो समझ में आया सब इसका सवाल का जवाब, हु इज गोइंग टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड, एंड दैट इज द अनस्टेबल स्पीशीज इज गोइंग टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पर्पस क्या है, टू अचीव स्टेबिलिटी। सो द अनस्टेबल स्पीशीज विल अचीव स्टेबिलिटी and therefore it will form a chemical bond. And how to define it is unstable, the one which doesn't have a inert gas configuration. Alright, so I hope the concepts are getting very clear to you. So the unstable species, to attain the inert gas configuration, is resulting in the formation of a chemical bond. Alright, done everybody? Fantastic. Abhi next thing is, let us take some examples. I'll take an example of a electropositive element. Okay, short form लिखता हूँ once again, electropositive element. Okay, the best example everybody knows, and that is the alkali metal. Okay, sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, all these. So अगर मैं एक electropositive metal लेता हूँ और वो सबसे बेस्ट example is an alkali metal, तो क्या करेगा? It will lose electron. Because you know very well, metals have a tendency to lose electron. तो कॉमन सेंस है दोस्तों। When I say that a particular species is giving something, it's only when there is another species who's going to accept it. अल्कली मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई उसके साथ कोई और स्पीशीज होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके इसलिए इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब यहाँ पर भी मैंने ये वीडियो बनाया, मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप हो जो इस वीडियो को सुन रहे हो। ओके क्लास में भी जब एक टीचर लेक्चर लेता है तो सामने स्टूडेंट्स होते हैं, ओके जो उसको सुन रहे हैं, जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही है, अल्कली मेटल इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इज अनदर स्पीशीज हु इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके तो वो कौन होगा? Yes, you got it right. It's electronegative element होगा. So this electronegative element, okay, is going to gain electron. समझ में आया? Electropositive is going to lose electron. देखिए एरो देखिए दोस्तों, दिशा डायरेक्शन देता है वो। ओके आप बहुत माहिर हो उसको समझने के लिए कि कौन सी दिशा में कौन जा रहा है। यस तो यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है फ्रॉम द अल्कली मेटल, so that means the alkali metal is losing electron. And it is now देखो ये एरो किधर जा रहा है, it is going towards the electronegative element. यानी electronegative element is accepting electron. Let us take the best example is halogens. ओके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर अभी देखिए अल्कली मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ओके और दोनों का मकसद यही है, और वो क्या है दोस्तों? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Okay, so this is taking place by the loss of electron and gain of electron. Okay, and that is what is resulting in what? See, it's only about electron दोस्तों, याद रखिएगा। Okay, we are using the word electrostatic force of attraction. The species which is responsible for chemical bonding is electron, and therefore we say chemical reactions generally take place outside the nucleus. Because electrons are present outside the nucleus. The reaction which takes place inside the nucleus, which brings about changes in the number of neutrons, in the number of protons and all, we term it as nuclear reactions. लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द स्पीशीज विच आर रिस्पॉन्सिबल, अगेन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स।
Okay, whenever we talk about bonds, whatever type of that bond is, we are going to be discussing about the various types of bond. क्योंकि दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. केमिकल बॉन्डिंग का ये जो मैंने सीरीज चालू किया, इसका ये पहला पार्ट है. ओके, अभी आगे आगे मैं और भी पार्ट्स में वीडियो में लॉन्च करते रहूंगा. चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा आप लोगों ने, जी हाँ, नहीं किया तो अभी कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट आसानी से पता चल जाए. ओके, सो कमिंग बैक इज व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर इज कि in this case the electropositive alkali metal is going to lose electron. प्रोटॉन्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया बिकॉज प्रोटॉन्स इज इनसाइड द न्यूक्लियस. तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया है, मिसमैच हो गया है. तो चार्ज डेवलप होगा. एटम में क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली सेम, सो देयर इज नो चार्ज, सो वी से एटम इज न्यूट्रल. लेकिन अभी तो ये ऊपर नीचे हो गया. ओके, इलेक्ट्रॉन जाने के वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गया. Actually, ऐसा प्रोटॉन बढ़ता नहीं है, we are not adding proton. Okay, but then by the loss of an electron, the number of proton exceeds the number of electron. Proton is positive, as I want my students to be. Yes, होना पॉजिटिव, जी हाँ, और वो पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रखेगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो पॉजिटिविटी कैसे आएगा, जब आपको कंसेप्ट समझेगा. और यही मेरा भी पर्पस है. जैसे यहाँ पर कैसा पर्पस है ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज टू अचीव स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी दोस्तों तभी आता है जब कंसेप्ट समझ में आता है. Okay, so that is what my purpose over here of making these videos. Alright, so coming back over here is that what we say is the electropositive alkali metal, when it loses electron, alright, so that means the electron is less in number as compared to that of the proton, and therefore it gets a positive charge. तो यहाँ पर एक positivity हो जाती है तैयार. Okay, there is a positivity over here. See this. Okay, now यहाँ पर देखो electronegative halogens is going to accept an electron. Okay, so the number of electrons and protons once again mismatch. The number of electron becomes more. Alright, so that means there will be what? Negativity. So there is a negative charge developed. Okay, so there is a positive charge developed and there is a negative charge developed. Opposite charges है दोस्तों, प्यार तो होना ही था. Okay, so there is a force of attraction. So the force of attraction which is taking place or which is going to be existing, this is a Coulombic force of attraction, we can use the word, between the oppositely charged species. अब इसको atoms नहीं बोलेंगे. जब भी एक atom के ऊपर charge आ जाता है तो it is being called as what? A ion. और specifically ये बन गया cation और ये बन गया anion. Okay? और ये दोनों के बीच में अभी दिल तो धड़केगा ही. Okay, so cation and anion, so there is going to be a force of attraction. The Coulombic force of attraction between the oppositely charged ions is now called as a ionic bond. Okay, उसे क्या बोला जाएगा? Ionic bond. समझ में आया आप लोगों को? वापस से बोलूं, Coulombic force of attraction. Okay, or the electrostatic force of attraction which is existing, okay, between, or it is going to be developed between the oppositely charged ions is called as what? Ionic bond. Alright, so this is what is going to be there, and this I guess you have been very clear that the formation of an ionic bond is primarily because of what? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ओके, सो दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस. कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो ये एरोस तो समझ में आ रहा है आप लोगों को. सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू अ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. ओके, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी क्लियर अप टू दिस पार्ट. यस, अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, हाउ दैट आयनिक बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म. ओके, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. Now the example is most common, my dear friends. Whenever you have learnt about ionic bonding, the very first example is going to be NaCl, that is sodium chloride. So now alkali metal and halogens which I was talking about. So when we talk about sodium, atomic number of which is what? 11. So its electronic configuration is given as 2, 8 and 1. So I'm going to show only the valence electron. Okay, that is the electron which is present in the third shell. Next is I have a chlorine, Cl. I'll show the electrons of chlorine.
this way, it is 2, 8, 7. Atomic number of chlorine is 17. Okay, so the blue ones are the electrons of chlorine and the black one is the electron of sodium. So now, if you can remember the purpose to achieve the inert gas configuration. Okay, so that means the one which is not having inert gas configuration will have a tendency to form a bond. Inert gas configuration has to be there in the last shell. Okay, the last shell of sodium has got 1 electron. So it has got two possibilities now. Either it will gain 7 or lose 1. Which is more easy? Oh yes. Okay, losing 1 is more easy. लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई तो होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए है. क्लोरीन तुरंत आ गया, मैं हूँ. Okay, and that is 287. 17 electrons total. यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 electrons. Okay, so it's always better for the chlorine to gain 1 electron as compared to what? Losing 7 electrons. Okay, so that means there is a transfer now taking place of an electron. So this electron gets shifted over here. And as a result of which, now what we have is sodium with a positive charge. And now we show chlorine. And then I will show the electrons also. Six electrons of chlorine, 1 electron extra, 7 electrons of chlorine and 1 electron extra which is being from sodium, and as a result of which I will show over here minus charge. Okay, the sodium has a positive charge and chlorine has got a minus charge, and then there will be a force of attraction, and that force of attraction results in what? NaCl. And this bond I call it as what? Ionic bond. So we say it's a transfer of an electron from a electropositive element to a electronegative element. Alright, so for the formation of an ionic bond, two species are required. One is the cation and the other is going to be what? Anion. And if you can see after the transfer, when we talk about Na plus, I write down as it gets a configuration of 2,8 and this one will get 2,8,8. So you can check it out. In both the species, in the valence shell, there is going to be inert gas configuration. क्योंकि यही तो बोलता है रूल कि लास्ट शेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. तो सोडियम के फिर वो कोई भी शेल हो, ओके, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि यही नंबर वाले शेल में होना चाहिए. आई एम यूजिंग द वर्ड लास्ट शेल. तो सोडियम के केस में द लास्ट शेल इज द सेकंड शेल, तो उसमें आप देखो क्या ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. क्लोरीन के केस में द लास्ट शेल इज द थर्ड शेल और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है. Okay, and therefore both of them achieves what? Stability. Okay, और फिर opposite charges हुआ है तो जैसे मैंने बोला है कि there is going to be a force of attraction and that force of attraction is a ionic bond. Okay, so this is an example, the simplest example to make you understand that yes, how the ionic bond formation takes place. Okay, अब जैसे next thing is मैंने बोला है the most essential requirement is for ionic bonding is cation as well as anion. Positively charged ion as well as a negatively charged ion. So let us now consider a crystal lattice of a ionic solid. हाँ, जनरली अभी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है मैं, और वो है मेरी जुबान से जो शब्द निकला है वो है सॉलिड. क्योंकि ज़्यादा करके देखा जाता है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है. और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर फिजिकल स्टेट के साथ लिंक कर दिया जाए तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फिजिकल स्टेट की बात करते हैं हम लोग. वी डोंट गो इनटू द एडवांस लेवल. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ the forces of attraction. In solid, the forces of attraction is highest, followed by that of liquid, and then followed by the gas. So generally speaking, we say the ionic bonds are going to be strong, and therefore the greater force of attraction generally says that the compound is going to be what? Solid. I am using the word generally. इसलिए मेरी जुबान से वो शब्द आया ionic solids. तो उसका एक जो lattice होता है वो हम लोग देख लेते हैं, the crystal lattice of the ionic solid. Okay, it is a space in which the particles are going to be arranged. Okay, that is called as a lattice. Closely packed, three-dimensional regular arrangement. That is called as a crystal lattice. Okay, so when you talk about the crystal lattice of an ionic solid, जैसे मैंने already बताया है आप लोगों को कि it is made up of a cation as well as an anion.
So we start with a positive ion, negative ion, positive, negative. Okay, यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इससे पहले कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी शंका आ जाए तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ. यहाँ पर आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट the force of attraction which is existing amongst the oppositely charged species. Okay, so please don't relate it to the fact that, okay, that the sizes, how they are going to be same. I also know very well that if you are going to talk about the cations and the anions, generally speaking, the cations are going to be smaller and the anions are going to be larger. But यहाँ पर वो सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ. अब मुझे यहाँ पर क्या concept explain करने का उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, because there are various concepts at various levels. ओके तो यहाँ पर साइज को हम लोग इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर चार्जेस के बारे में बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द इंटरैक्शन अमॉन्ग्स दोस चार्ज स्पीशीज. ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ. फ्रॉम माय साइड आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर. ओके, सो कमिंग बैक ओवर हियर इज, सो this is what the crystal lattice or the space lattice which is going to be there of the ionic solid which is made up of oppositely charged ions. Okay, now when we talk about the forces of attraction, yes, the force of attractions, now you can check it out. Okay, these are what the force of attractions are, and everywhere if you are very keen enough to see, you will come to know, and that is the oppositely charged species are going to be in close contact, or we say with the force of attraction, the oppositely charged species. Okay, that means in the entire lattice you can observe one very crucial concept, and that is that there are no two positive ions being attracted with each other, there are no two negative ions attracted with each other. So every positive ion is going to be attracted by means of what? The oppositely charged ion. So positive is surrounded by negative and vice versa. Negative is surrounded by positive. Okay, so this is what you can see. So this is what we talk about ionic bonds. अभी यहाँ पर जो electrostatic force of attraction है, okay, electrostatic force of attraction is extending in all directions. It extends in all directions. यानी in other words, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयनिक बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनेगा ऐसा नहीं है. It can take place in any way, because आप देख सकते हो यहाँ पर, if you have a look at this positive ion, if you look at a negative ion, it is experiencing force of attraction in all the directions. ओके, तो वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा है, यानी आयनिक बॉन्ड भी सिर्फ उसी डायरेक्शन में होगा, नहीं. Ionic bond formation can take place in all directions, because the ions which are responsible for the ionic bond formation experiences attraction from the oppositely charged ion in all the directions. और इस वजह से हम लोग अभी क्या बोलेंगे कि ionic bond are non-directional. ठीक है, जब बॉन्डिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इट कैन टेक प्लेस इन ऑल द डायरेक्शंस, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सटेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली. तो जब वो किसी भी डायरेक्शन में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज नॉन डायरेक्शनल. कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता. कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, और इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको कि इट इज हैविंग अ डायरेक्शनल कैरेक्टर. लेकिन यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स में वी से इट इज नॉन डायरेक्शनल. Okay, it can extend, it can take place in all directions. तो ये मैं आपको बताना चाहता था. So two important things over here is, one is the crystal lattice of the ionic solid is made up of cations as well as anions. Every cation is surrounded by an anion, and every anion is surrounded by a cation. Okay, and it's a fixed number also. Next thing is the force of attraction which is existing amongst the oppositely charged ions. It is extending equally in all the directions. And therefore ionic bond formation can take place in all the different directions. Okay, and therefore I say it is non-directional. Okay, अगर आप यहाँ पर देखो आप तो देख सकते हो आप, if I see a positive ion over here, it is surrounded by 1, 2, 3 and 4. 4 negative ions in one plane. This is in one plane. Okay, अब ये plane आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन it is a 3-dimensional structure. So it is like this. Okay, वापस से बोलता हूँ, ये आपको ऐसा दिख रहा है, it is being look like this, but actually it is this way. Okay, so there will be one layer above it, there will be one layer below it.
तो उसके भी एक एक ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इस पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएंगे। समझ में आया? यानी ये एक प्लेन में कितने नेगेटिव आयन्स उसको सराउंड कर रहे हैं? 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, तो 4 नेगेटिव आयन्स इस पॉजिटिव आयन को सराउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक नेगेटिव आयन आएगा इस लेयर के ऊपर वाले में और एक नेगेटिव आयन आएगा इस लेयर के नीचे में। ओके, तो ये एक लेयर है, दिस इज वन प्लेन। उसके ऊपर एक प्लेन आएगा तो उसका एक नेगेटिव आयन उसके पॉजिटिव आयन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और एक प्लेन नीचे आएगा तो उसका भी एक नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएगा। सो इन दिस वे टोटल विल बी हाउ मेनी? 6। ओके, सो दैट मीन्स देयर आर 6 negatively charged ions surrounding one positive ion. Okay, and if the distribution is even, okay, that means the cation and the anion proportion varies every time. NaCl है तो 1:1 है, okay, CaCl2 है तो 1:2 है, etc etc. तो इस तरीके से यहाँ पर ओके, इफ वी आर गोइंग टू कीप द प्रोपोर्शन सेम तो हम ऐसा बोलेंगे, वाइस वर्सा भी बोलेंगे, यानी 1 नेगेटिव आयन इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय 6 पॉजिटिव आयंस। ओके, एंड अराउंड 1 पॉजिटिव आयन देयर आर गोइंग टू बी 6 नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, और इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। ओके, व्हाट वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन नंबर, and the coordination number is equal to 6 in this particular case. It differs, okay, from one particular ionic lattice to the another ionic lattice. लेकिन यहाँ पर coordination number कितना है उसका? 6. The number of oppositely charged ions which are being associated with, which are in contact with one particular ion, that is called as a coordination number. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पर इस particular example में आप बोलेंगे coordination number is 6. तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है सो फार के आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, सो फ्रॉम अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द lattice of ionic solid, where I showed the arrangement of the cations and anions. Every cation is associated with the anion and vice versa. Next, the electrostatic force of attraction is extending in all possible directions, and therefore it is going to be non-directional. Okay, so ionic bonds are non-directional. And then I told you about the coordination number. Okay, the maximum number of oppositely charged ion, okay, which is surrounding a particular ion, is called as a coordination number. और मैंने आपको यहाँ पर example भी दे दिया है कि that is, this comes out to be what? 6. I hope यहाँ तक आपको कोई भी doubt नहीं है.